Hi my cuties, welcome and welcome back to my channel. In today's video, I am going to share with you all this very easy peasy beginner friendly makeup tutorial using only makeup products under 300. So let's get started. Before applying any makeup, make sure that your skin is well prepped. मतलब कि अपने क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर अप्लाई करके रखा हो. तो मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर के लिए यूज़ कर रही हूँ एक्वालॉजिका का सनस्क्रीन. आई हैव बीन यूजिंग दिस सनस्क्रीन फॉर सो मेनी ईयर्स. I have no idea how many tube I finished of this sunscreen. This is so good. It's protect my skin, also it's moisturize my skin. For primer, I'm using this Inside Pore Minimizer Primer. It's not really blur out your open pores. Basically what it does, it also moisturize your skin. It's a cream based primer and साथ ही साथ स्किन को थोड़ा सा स्मूथ कर देता है. तो मेरा मेकअप एप्लीकेशन फाउंडेशन एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है. फॉर कलर करेक्शन मैं आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दे रही हूँ. ये इनसाइड का कलर करेक्टिंग पैलेट एंड दिस इज Maybelline एज डिवाइन कंसीलर. तो इफ़ यू हैव वेरी इंटेंस डार्क सर्कल्स और एनी डार्क फ्रेश एक्ने मार्क्स तो आपको वहाँ पे लगाना है ऑरेंज कलर करेक्टर. अगर आपका स्किन टोन इवन है, मतलब कोई डार्क सर्कल्स नहीं है, कोई एक्ने मार्क्स नहीं है, तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो. आफ्टर दैट न्यूट्रलाइज दैट ऑरेंज कलर. मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एक डार्कर शेड का कंसीलर. दिस इज इन द शेड कैरामल. ये Maybelline का एज डिवाइन कंसीलर है. आई डोंट रियली लाइक दैट पैकेजिंग. I love the formula of this concealer, but packaging it's a big no. And this is so good. It blends so easily. And अगर आपके पास कोई भी ऑरेंज कलर करेक्टर नहीं है तो आप अपने स्किन टोन से 1 to 2 शेड डार्क कंसीलर को यूज करके भी अपना कलर करेक्शन कर सकते हो. And I'm going to blend all this with my hands. For foundation मैं यूज कर रही हूँ Maybelline का Fit Me foundation in the shade 330. This particular shade is kinda dark for my skin tone, as you guys can see here. My perfect match will be a 332 golden caramel. अगर इस फिट मी फाउंडेशन को आप लेने की सोच रहे हो, मेक श्योर दैट 1 to 2 शेड लाइटर शेड ही परचेज करना, क्योंकि ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है. तो मैंने स्किन प्रेप बहुत अच्छे से किया था, तो इसलिए मेरा फाउंडेशन बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड हो रहा है. माई बेस लुक सो फ्लॉलेस एंड स्मूथ. एंड ये फाउंडेशन काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है. एंड बिगिनर कैन ईजिली यूज दिस फाउंडेशन एंड गिव्स यू अ वेरी डेमी मैट काइंड ऑफ अ फिनिश. सो फॉर हाईलाइटिंग कंसीलर आई एम यूजिंग हियर Insight HD concealer. This is in the shade MN20. This will be a perfect highlighting shade for brown skin tone. This concealer do not oxidize and काफ़ी full coverage liquidy सा concealer है, बहुत easily blend हो जाता है. It do not crease at all. पहले I do not do this highlighting step. मैं इस step को skip कर देती थी, पर जब से मैंने इसको करना शुरू किया है there is no going back. Now it's a must-have steps in my makeup routine. Definitely check out this concealer under a budget. Then for my eyebrows, I'm gonna use this Mars eyebrow pencil. This is retail for just 69 rupees. This is in the shade dark brown. I think define your eyebrows is a very important step in your makeup routine. For blush, Inside का lip and cheek tint use कर रही हूँ. This is in the shade strawberry. This is a beautiful pinkish cool tone blush shade, and I'm going to apply a little bit on my eyelid. फिंगर से ही ये बहुत प्यार से ब्लेंड हो रहा था. एंड फॉर हाइलाइटर आई एम गोना यूज इनसाइड क्रीम हाइलाइटर. दिस इज इन द शेड कॉस्मिक पावर. ऑल द प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग स्टेप बाय स्टेप. इट्स ऑल अंडर 200. दीज आर सो अफोर्डेबल गुड क्वालिटी मेकअप प्रोडक्ट्स. ये हाइलाइटर भी बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है एंड और इसमें एकदम भी चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है. फॉर सेट एवरीथिंग आई एम गोना यूज Maybelline कॉम्पैक्ट पाउडर. दिस इज इन द शेड नेचुरल बफ. एंड इसमें से जो पाउडर पफ आता है उससे ही मैं पाउडर अप्लाई कर रही हूँ. काफ़ी अच्छी तरीके से फेस को मैटिफाई कर देता है. पाउडर काफ़ी स्मूथ कर देता है बेस मेकअप को. उसके बाद फॉर आईलाइनर इनसाइड का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ. ये एकदम जेड ब्लैक आईलाइनर है and it's retail for just 80 rupees. And today I'm not going to create any wing liner. For mascara, मार्स का डबल ट्रिपल मस्कारा यूज कर रही हूँ. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मस्कारा अंडर अ बजट एंड इट गिव्स यू लाइक अ फॉल्स लैशेस काइंड ऑफ अ इफेक्ट. आप फॉल्स लैशेस लगाना भूल जाओगे आफ्टर ट्राइंग दिस मस्कारा. दिस इज हाईली रिकमेंड फ्रॉम माई साइड. It provides length and volume at the same time. For today's lip combo, I'm gonna use Mars lip liner shade Scandalous Brown and lip gloss in the shade Berry Burst. I fell in love with this lip liner shade. This is a beautiful pink tone brown shade and I want a lipstick in this shade. If you guys
guys know any lipstick in this color, please recommend me in the comment section. And this lip gloss shade, oh my god, it's so juicy. It's also complement my lip color and दोनों का combination मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है. This is a fall coded color I feel like, and this lip gloss is not like a sticky kind of a gloss. It's so comfortable on your lips, and this is the final finish look. Make sure to check description box for all the product links and details. ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको और कैसा मेकअप ट्यूटोरियल देखना पसंद है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड बाय.